Next thing which we are going to discuss is homogeneous differential equations. And for that, we need to first discuss what are the homogeneous functions. So homogeneous functions, चलें पहले ये लिख लें. Homogeneous ODEs of first order. ठीक है. But for discussing these kind of ODEs, first we need to discuss homogeneous functions. If we have a function, maybe let f of x, y be a function, define on some rectangular domain, be a function, define on some rectangular domain. Domain, आप इसको D कह लें या R कह लें, it doesn't change anything. So this is your function of two variables, x and y. Then this function is called a homogeneous function. Then f of x, y is called homogeneous function if it satisfies the following criteria. अगर आप इसमें x की जगह tx और y की जगह ty put कर दें, you are making a substitution. So you are replacing x by tx and y by ty. ठीक है. और ये t जो है ये इस फंक्शन से बाहर कॉमन आ जाए. Some power, it could be t power alpha f of x y. आपके पास साथ में फंक्शन ऑफ एक्स वाई जो कि ओरिजिनल था वो आ जाए और t जो है some power of t may be come out of that function. ठीक है. We can take common t alpha from that function and we obtain the original function f of x y. ठीक है. If any function satisfies this property, then that function is called a homogeneous function. अब आपके पास अगर आपके पास उसी टाइप की एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर ODE है, which is m of xy dx plus n of xy dy equal to 0. Okay. Then this differential equation is called a homogeneous first order ODE, ठीक है, is called homogeneous ODE if m of xy and n of xy are homogeneous functions. If m of xy and n of xy are homogeneous functions of same degree. What is the degree? Degree is this alpha. ठीक है. F of xy is called a homogeneous function of degree alpha if f of tx ty is equal to t raised power alpha f of xy. Then this f of xy is called homogeneous function. यहाँ पे आप लिख दें homogeneous function of degree alpha if it satisfies this condition. Now this kind of differential equation, इसको आप 1 कह दें,
Now the equation 1 will be called a homogeneous first order ODE if m and n, these two functions, are homogeneous functions of same degree. दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए? सेम. अगर m of x y 2 डिग्री का है या 3/2 डिग्री का है तो n of x y भी डिग्री 2 या डिग्री 3/2 का होना चाहिए. दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए. ठीक है. Then we can say that this differential equation is a homogeneous differential equation. Now, how to solve these homogeneous differential equations? Let me go to the other board. I hope you get it. If you have any question, you can ask me. First, we shall discuss a couple of examples of homogeneous functions, and then we shall discuss homogeneous differential equations. Okay. Let's discuss first examples of functions which are homogeneous. For example, अगर हम कहते हैं कि f of x y जो है आपके पास x square plus 2xy plus y square है. ठीक है. So, in order to check whether this function is homogeneous function, what we do, we replace x by tx and y by ty. ये हमने substitutions करनी है. This. So f of tx, ty, it is what now? X की जगह tx आ जाएगा, tx का square plus 2x की जगह tx, y की जगह ty plus y square की जगह ty का whole square. Now you can see that it is, this term is t square x square plus 2t square xy plus t square y square. Now can we take t square outside that function? We can take common it, t square times what? X square plus 2xy plus y square. Now can we write this thing as t square f of xy? Because this, the function inside these brackets, it is the original function f of xy. Now we can write this thing as t square f of xy. What does it mean? The given function f of xy is homogeneous function of degree 2. डिग्री 2 क्यों है? क्योंकि आपके पास यहाँ पे पावर t की पावर 2. Whatever the power of t is, this will be the degree of the corresponding function, homogeneous function. I hope you get it. If you have any question, you can ask me. There are a couple of more examples of homogeneous functions in my notes. You can see them. If you have any question, you can ask me. Otherwise, we are going to discuss homogeneous ODEs. अगर कोई भी फंक्शन ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करता तो वो homogeneous function नहीं होगा. Let's do an example of a function which is not homogeneous. Another example, maybe let f of xy is what? X plus y square. ठीक है. अगर f of tx लेंगे, ty लेंगे, तो आपके पास यहाँ पे x की जगह tx और y की जगह ty का स्क्वायर. ठीक है. अब यहाँ पे tx plus t square y square
अब यहाँ पे t को हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर एक t कॉमन लेंगे तो आपके पास x प्लस टी वाई स्क्र आएगा, ठीक है। सो दिस इज नॉट t सम पावर f of x y, ठीक है। So the given function is not homogeneous function, ठीक है। I hope you get it. Now the Sir, ODE I have of, yes जी बेटा, so in this case, so if you were to look by observation, so it would only be homogeneous if x and y are of the same degree. Agar same degree nahi hai, so they would obviously not be homogeneous. yes you can say that, ठीक है। x of x, each term in that function should be of same degree, each term, not only x y, ठीक है। पहली टर्म में अगर आपके पास डिग्री इसकी 1 है, इसकी डिग्री 2 है, तो दिस विल नॉट बी अ होमोजेनियस फंक्शन। हर टर्म में डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दिस इज बेसिकली यू कैन डू इट बाय ऑब्जर्वेशन, यू आर ट्रू, दैट्स ट्रू, ठीक है। नाउ आई होप यू गेट इट। लेट मी नाउ start the homogeneous first order ODE and how to solve them. अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है, m of x y dx प्लस n of x y dy, ठीक है, तो इज होमोजेनियस, ठीक है। और अगर ये होमोजेनियस है तो क्या होगा, देन आपके पास m of x y and n of x y they both will be homogeneous function of same degree, ठीक है। तो फिर इसको हम अगर ये होमोजेनियस है तो क्या होगा, दैट इज m of x y and n of x y satisfy what, satisfy m of tx ty is equal to t raised power alpha m of x y, ठीक है, और n of tx ty should be equal to t raised power alpha n of x y, ठीक है। तो ये दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, एंड दीज टू फंक्शंस दे मस्ट सेटिस्फाई दीज कंडीशंस, ठीक है। देन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी होमोजेनियस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ हाउ टू सॉल्व इट, ये तो हो गया क्राइटेरिया, दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर ओडीई टू बी होमोजेनियस ओडीई, ठीक है। नाउ हाउ टू सॉल्व इट, नाउ we make a substitution in this case, and that substitution is you can take both of them. केस वन में आप कह सकते हैं substitute y is equal to ux, ठीक है, where u is another function of x, where u is some function of x, ठीक है। एक्चुअली आपके पास अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में x और y है, तो यहाँ पे y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे y इज ऑलरेडी अ फंक्शन ऑफ x, आप इस y की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहे हो u times x, where u is another function of x, means you can say that y of x is equal to u of x times x. You are going to make this substitution in that given differential equation, ठीक है। Either you can do this or you can make a substitution of x. X is equal to some v times y. अगर आपके पास x function of y है तो यहाँ पे v function of y होगा, means x अगर function of y है तो v should be a function of y into y. Now what are you trying to do in this thing? आप y की जगह एक न्यूली फंक्शन टाइम्स x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नॉर्मली हम यही वाली सब्स्टिट्यूशन करती हैं इन अ वेरी रेयर केस जहां पे
n of xy is more simple than m of xy, then we can make this substitution. We'll discuss this later on, but for now, we'll try this substitution in the first example. When we substitute y is equal to u of x in that given differential equation, the given differential equation will be converted into a separable differential equation. This substitution will convert the given differential equation, which is homogeneous first order differential equation, it will convert that equation into a separable differential equation or linear differential equation, mostly in separable differential equation, which can be solved by using by separating the variables. Then let's do this with the help of an example. This one maybe. Example 1 maybe. Solve this differential equation. Solve x square plus y square dx plus x square minus xy dy equal to 0. Now, if we observe here, you can see that m of xy, each term is of same degree, n of xy, each term is of same degree, degree 2, degree 2, degree 2, degree 2. तो आपके पास ये m of xy और n of xy, they both are homogeneous functions of xy. ठीक है? तो यहाँ पे m of xy क्या है आपके पास? It is x square plus y square. और n of xy क्या है आपके पास? It is x square minus xy. ठीक है? We can say that, or we can check that m of tx and ty is what? It is t square m of xy. ठीक है? Or n of tx ty is what? It is t square n of xy. So the given differential equation, which is this one, equation 1, you can say it, equation 1. Equation 1 is homogeneous. Equation 1 is homogeneous ODE. अगर ये homogeneous ODE है, तो क्या करेंगे हम इसको solve करने के लिए? What we do, we will make a substitution. ठीक है? Substituting y is equal to ux, where u is a function of x, obviously. अगर y को हम पुट करेंगे ux, यहां पे भी y को ux पुट कर देंगे, तो हमारे पास हमें क्या चाहिए? dy भी चाहिए, which is differential of y. So dy is what? Differential of y is derivative of this thing with respect to x, means partial f over partial x. ठीक है? And then आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे with respect to x डेरिवेटिव लेंगे तो u dx प्लस with respect to u डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा? x du. ये आ जाएगा. ये इसका डिफरेंशियल होगा. ठीक है? वही जो डिफरेंशियल हमने जो डेफिनेशन लिखी थी, डिफरेंशियल ऑफ f is what? Partial f over partial x dx plus partial f over partial y dy. उसी तरह हम इसका डिफरेंशियल लेंगे. Now we have these two things. इसको आप 2 कह दें, इसको आप 3 कह दें. ठीक है? 2 और 3 को यूज करें 1 में. ठीक है? Using 1 or substituting 2 and 3 in 1. Using 2 and 3 in 1. What we get here, x square plus y की जगह ux का square means u square x square. ठीक है? Times dx plus x square as it minus x times y की जगह
यू एक्स, ठीक है, साथ में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या होगा, यू डी एक्स प्लस एक्स डी यू, क्या है? अब दिस होल थिंग इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 0। अब आप इस सारे को सिंप्लीफाई करें, अब इसमें आपके पास dx और du वाली टर्म्स हैं, ठीक है। यहां पे अगर इसको मैं दोबारा यहां पे लिखता हूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए आपके पास पहली टर्म में आपके पास यहाँ पे पहली टर्म से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। दूसरी टर्म से एक्स स्क्वायर यहां से भी कॉमन आएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं फिर यहाँ पे, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर 1 प्लस यू स्क्वायर dx प्लस यहां पे भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस यू टाइम्स यहां पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है यू डी एक्स प्लस एक्स डी यू, ठीक है, इक्वल टू 0, ये आ जाएगा आपके पास। अब इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहां पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, व्हाट वी गेट हियर, एक्स स्क्वायर 1 प्लस यू स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस यू टाइम्स यू डी एक्स प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, इट इज एक्स क्यूब टाइम्स 1 माइनस यू एंड डी यू इक्वल टू 0। Now you can see that the variables have been separated. X और Y जो है वो आप you can see that अब इन दो टर्म्स को हम इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी dx है, यहाँ पे भी dx है, ठीक है। इन दोनों को इकट्ठा करें तो आपके पास x स्क्वायर दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास अंदर क्या आएगा 1 प्लस यू स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे u प्लस u माइनस यू स्क्वायर टाइम्स dx, ठीक है, प्लस एक्स क्यूब 1 माइनस यू डी यू इक्वल टू 0। यहाँ पे ये यू स्क्वायर और यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, व्हाट वी हैव ऑब्टेन्ड फाइनली एक्स स्क्वायर 1 प्लस यू डी एक्स प्लस एक्स क्यूब 1 माइनस यू डी यू इक्वल टू 0, विच इज अ सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें x और u, यहाँ पे x और u, ठीक है, आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। आप इसको दूसरी साइड पे ले जाएं या इसको दूसरी साइड पे लेके जाएं तो क्या होगा, डी यू और एक्स क्यूब टाइम्स माइनस 1 माइनस यू, यह आ जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 प्लस यू डी एक्स। अब यहाँ पे ये x को उधर डिवाइड कर दें और 1 प्लस यू को इधर डिवाइड कर दें, योर वेरिएबल्स हैव बीन सेपरेटेड, ठीक है, वेरिएबल्स सेपरेटेड हो गए हैं आपके पास, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे 1 माइनस यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू, नेगेटिव साइन, साथ में डी यू और इक्वल टू एक्स क्यूब इधर डिवाइड होगा तो 1 ओवर एक्स डी एक्स, याद, ठीक है। माइनस इधर लगाएं, यहाँ पे प्लस कर दें, यहाँ पे माइनस कर दें, इट डजंट चेंज एनीथिंग। अब द वेरिएबल्स हैव बीन सेपरेटेड, नाउ what is left to do here, we have to integrate it on both sides, integrating both sides, what do we get here, 1 minus u divided by 1 plus u du is equal to minus integral 1 over x dx plus c. I hope you can do this integration and solve this, and you can get the answer after integrating it. Any question for the homogeneous differential equations?